तो गाइस आज के हमारे वीडियो होने वाले हैं डार्क एंड मैकेनिकल के टेट थ्योरी और इसमें जो है हम आज 101 क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू n2 बाई n1 इन अ बेल्ट ड्राइव। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है d1/d2। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is known as the upper side in a belt drive having less tension। इसका आंसर देखते हैं। ए स्लैक साइड, ढीली साइड एक बेल्ट ड्राइव में ऊपरी पक्ष के रूप में जाना जाता है जिसमें तनाव कम होता है। वो कौन सा है? ढीला साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोगी पुली इज फिटेड ऑन द बेल्ट फॉर। किस लिए फिट की जाती है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर ए इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क के चाप को बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बेसिक टाइप्स आर इन पुली। ऑप्शन है इसमें 2, 3, 4 और 5। आंसर है इसका डी 5 प्रकार की पुली आमतौर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। इसका सही आंसर है ए to rotate the driven pulley in the same direction of driving pulley। Next question, how many method of mounting a pulley rigidly on a shaft। इसका सही आंसर बी 3 3 मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू localized movement of the belt resulting elastic stretch which is known as। बेल्ट के स्थानीयकृत आंदोलन के कारण लोचदार खिंचाव होता है जिसे क्या कहते हैं? क्रीप। Next question, what type of pipe is corrosion resistant and more flexible। सही आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन है इसमें WI पाइप, CI पाइप, प्लास्टिक पाइप, स्टील पाइप। ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक पाइप आर मोर corrosion resistant and more flexible। नेक्स्ट क्वेश्चन, which kind of pipe of used for high pressure or high temperature। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ए स्टील पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of pipe is generally used for domestic purpose where pipeline contain frequent bend। किस प्रकार के पाइप का उपयोग आमतौर पर घरेलू उद्देश्य के लिए किया जाता है जहां पाइपलाइन में अक्सर तुला होता है। इसका सही आंसर देखते हैं डी लीड पाइप। व्हाट इज द थ्रेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड। पाइप थ्रेड का थ्रेड एंगल क्या है? इसका सही आंसर देखते हैं ए 55 डिग्री। दोस्तों ये डिग्री है, मिस्टेक की वजह से यहाँ पर 55 550 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस आर कॉपर एंड ब्रास ट्यूब्स कनेक्टेड। आंसर देखते हैं इसका बी ब्रेजिंग और सोल्डरिंग आर प्रोसेस टू कनेक्टेड कॉपर एंड ब्रास ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which kind of iron is used for manufacturing of CI pipe। से आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है इसका बी ग्रे क्रॉस्ड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fitting is used to increase the length of size। सही आंसर है इसका ए सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the elbow fitted used। इसका सही आंसर है दोस्तों बी एट द एंगल। एल्बो को हम एंगल के लिए यूज करते हैं। Which type of pipe fitting is used for reducing diameter of pipe। Reducer। सही आंसर इसका बी। Which is the plug used in pipe fitting। फिटिंग प्लग किस लिए यूज करते हैं?
to close the end. Next question. Which is the standard metal band fitting to the change the direction of pipe? पाइप की दिशा बदलने के लिए मानक धातु मोड़ फिटिंग कौन सी है? इसके ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाइप फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट अ ब्रांच पाइप? शाखा पाइप को जोड़ने के लिए किस प्रकार की पाइप फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पीवीसी पाइप? पीवीसी पाइप का मटेरियल क्या है? ए स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पाइप इज कॉमनली यूज्ड फॉर वाटर, स्टीम, ऑयल एंड गैस? द राइट आंसर इज बी, स्टील और रफ आयरन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, where will you see union or flange union joint? The right answer is option number B, for easy maintenance, आसान रखरखाव के। Next question, which pipe joint are used to connect the large diameter of pipes? The right answer is flange joints are used for connect the large diameter of pipe. Next question, which kind of pipe joints are used for carrying fluid under high pressure? The right answer is hydraulic pipe joint. Next question, which is called by a number of gears connected together? The right answer is B, gear train. Next question, what is the full form of PCD in gear? Piece circle diameter. The right answer is B. Next question, how many types of gear teeth profile are generally used? The right answer is A, two types. Next question, what is called by the diameter at the bottom of the tooth space? दांत रिक्त स्थान के तल पर व्यास द्वारा किसको कहा जाता है? The right answer is B, root diameter. Next question, what is called the smaller one is the pair of gear? गियर की जोड़ी में छोड़े को क्या कहा जाता है? The right answer is C, pinion. Next question, which type of gear is used is called while two intersecting and coplanar shorts are connected by gears? The right answer is C, bevel gear. Next question, which gear is used to transmit power to the two parallel shafts and axial thrust? The right answer is A, helical gear. Next question, what is the definition of diffusion gear? The right answer is A ratio of number of the teeth of PCB. Next question, what is the value of product of circular pitch and diameter pitch? The right answer is C, 2 pi. What is the equal to the product of module and diameter pitch? The right answer is D, 1. What is the
Sum of addendum and redundant fold. The right answer is all depth. Next question. What is the including angle of double helical gear? Right answer is D. Sorry, C. 120. Next question. What type of gears are used to convert rotating motion into linear motion? The right answer is A. Bag and pinion gear. Next question. In a worm and worm gear, match the center distance is C and worm gear pitch diameter is D. What is the nominal pitch dia of worm? The right answer is option number A. D is equal to 2C minus D. Next question. What type of gear is needed to transmit motion between two parallel shafts? The right answer is option number B. Super gear. Spur gear. Next question. What is the example of non-intersecting perpendicular axial gear transmission? The right answer is option number B. Worm and worm wheel. What is the example of non-intersecting and perpendicular axial gear transmission? Option number B. Worm and worm gear. Worm and worm wheel. Next question. What is the gear train called if the axis of the first and last gear are coaxial? The right answer is option number C. Reverted gear train. Next question. Which gear profile has the infinity pitch radius? The right answer is C. Ran. Next question. Which one of the following is the proper proportion of simple indexing of gear cutting? The right answer is option number D. 40 by n. Next question. Which one of the following drive is used for transmitting power without slip? The right answer is option number B. Gear drive. Next question. Which one of the following is proportion of standard gear tooth of circle pitch in the term of module M? निम्न में से कौन सा वास्तविक मॉड्यूल एम के लिए मैट्रिक नीलेकल गियर अनुपात है? द राइट आंसर इज पाई एम. What is the most common type of gear used? The right answer is D. Spur gear. Next question. What do you understand by DP? The right answer is B. Diameter. Diametral. Next question. What is the other name of the double helical gear? The right answer is option number C. Herringbone gear. Next question. Which gear is used for high speed running and heavy duty? The right answer is A. Helical gear. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द सिंपल ऑफ क्वेश्चन एंगल? इसका आपको कमेंट में बताना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. आज के लिए सिर्फ इतना ही.